Hello, students. Welcome to e-classroom of English. Hope you're well and enjoying your e-learning classroom. Really, English is a fun. So once again, Harpreet Kaur, your English instructor, is here with a new topic: prepositions. So let's get started and discuss what is the definition of the word preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other words in the sentence. Prepositions वो word होते हैं जो noun या pronoun के साथ लगने के बाद they tells us what how they are related with some other words in the sentence. For example, वो हमें location बता सकते हैं, time बता सकते हैं, moment बता सकते हैं of the nouns and the pronouns. See the examples. She went to bed at 10 p.m. Here the word at is telling you the exact timing, that at what time it is done at 10 p.m. So at is telling you the exact timing, hence it's a preposition. The book is on the table. On word अगर वहाँ नहीं होता, the book is the table. How would you be able to know कि table पर ही book पड़ी हुई है? So on word is telling you that table पर book है. So hence again here it is the location told by the word on. He ran across the field. Across the field means इस तरफ से उस तरफ दौड़ते हुए वो चला गया. Again there is a movement and across word is the preposition here. Hence, the word which tells us about the location, positions, or the time of the noun or the pronoun, they are called as prepositions. They can also be used to show the direction, location, time, or to introduce an object. So, moving further, let's see the kinds of prepositions. The basic kinds, the main kinds of prepositions are prepositions of place, prepositions of movement, and prepositions of time. Their name itself is telling their meaning. उनका नाम ही हमें उनके meaning बता रहा है. But let us discuss them one by one in detail. First, preposition of place. Place is itself means जगह. किस प्लेस पर किस जगह पर काम हुआ है नाउन है सॉरी सो इट इज़ टेलिंग अस द पोजीशन ऑफ अ नाउन फॉर एग्जाम्पल एट मतलब एग्जैक्ट प्लेस वेन एवर यू आर नोइंग द एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट प्लेस देन वी कैन यूज दिस वर्ड फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स आर एट स्कूल नाउ हियर यू आर नोइंग द एग्जैक्ट पोजिशन और एग्जैक्ट प्लेस ठीक है इट इज़ यूज फॉर अ पॉइंट इन स्पेस वेयर समवन और समथिंग इज. So students are where? They are at school. At word is telling you. अगर वहाँ outside लिखा होता तो that means school के बाहर है. But at school means school में है. In. In word is also used as preposition of place. How? In means it is used with the name of a person or the container area to indicate where someone or something is. कोई चीज़ या कोई पर्सन कहाँ उसके अंदर अगर किसी कंटेनर के किसी रूम के किसी प्लेस में है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दिस बास्केट एंड देर आर सम टॉयज़ उसके अंदर टॉयज़ है तो दैट प्लेस इज़ कवर्ड ठीक है सो हैंस वी कैन से दैट द टॉयज़ आर इन द बास्केट क्योंकि बास्केट के अंदर है हैंस वी आर सेइंग द टॉयज़ आर इन द बास्केट आई एम सिटिंग इन द रूम मैं अभी इस वक्त रूम में बैठी हूँ आई एम टीचिंग यू सो आई एम इन द रूम तो इन वर्ड अगैन इज टेलिंग यू कि मैं कहाँ हूँ उस रूम के अंदर so it's a container the room is the place where I am inside it. Third word is on. It is also a preposition of place. How? On is used when the surface, when the thing is kept on a surface, touching it. ठीक है जब किसी सरफेस पर कोई चीज़ उसको टच करके रखी होती है लाइक हियर टेबल पर बुक रखी हुई है द बुक्स आर टचिंग द टेबल सरफेस hence we can say that the books are on the table so on is a preposition of place here. Now some more preposition of place. Between. Between means बीच में. So between is always used when we are talking about a person in between and two persons are near about. दो लोग होंगे आसपास उसके बीच में जब की बात होगी then you will say between. But if it is more than two person ठीक है then at a time we will use among. AMONG among. Between का example the girl is sitting between her parents so parents here are two people mama and papa so hence we can say the girl is sitting between her parents. Suppose if they would be friends the girl is sitting dash her friends so at that time you don't know the number of friends that means there are more than two friends so you will write among her friends. Under means किसी चीज़ के नीचे
ठीक है. अब height below something. For example, टेबल के नीचे डॉग है, यू कैन सी, बट इट इज़ नॉट टचिंग द टेबल. क्या वो टच कर रहा है उसका सरफेस जो है ऊपर वाला? नो. Hence we will say that the dog is sleeping under the table. Now seeing about some more pictures that will make you more clear about the preposition of place. See, behind the cat, or the owl, I should say. It's so funny. The owl is sitting behind the ball. पीछे. Beside means the owl is sitting at the side. उसके साइड में बैठा हुआ है. On the ball means बॉल के ऊपर बैठा हुआ है, touching that ball. Under means बॉल के नीचे. Between, as I told you, दो बॉल के बीच में. Inside the box, right? In front means सामने. Near, बराबर में. And above is ऊपर but without touching it. Okay. Now talking about prepositions of movement. Movement means when the position is changing. जब place है वो change होगी. It will not be fixed. For example, to. To means it is used to indicate a destination or a direction. For example, the boys go to school in groups. I am going to market. So here the destination is known to you कि कहाँ जा रहे हैं आप. So here when the destination is known, there is a movement कि आप कहीं जा रहे हैं, तो you are changing your place. So you will use to. Towards means किस तरफ जा रहे हैं, in which direction someone or something is. For example, she pushed her face towards him. Towards means के तरफ, उसका अपना चेहरा उसके तरफ push कर दिया. Through means movement from one side of something to another side. किसी चीज़ के अंदर से पास होना, from one side to another side. फॉर एग्जाम्पल रिंग में हम पास करके जंप करते हैं, दैट इज़ ट्रेन से टनल पास हो, टनल में से ट्रेन पास होती है, दैट टाइम वी कैन से द ट्रेन क्रॉस थ्रू द टनल. डेविड वॉक स्लोली थ्रू द वुड्स एंड सो ऑन. Into means whenever the any any liquid item or any particular thing is changing the space, यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रही है वो चीज़. At that time you can use into. For example, if I am pouring water into the jug, ठीक है, at that time what I am doing, मैं जग में से पानी ग्लास में डाल रही हूँ. I am pouring water from the jug into the glass. So the position of the water is changing. Now the water will be in the glass instead of the jug. So the places change. There is a movement. So here I will use into. I'm not saying that the glass water is in the glass, but I'm saying that I'm pouring water from the jug into the glass. Next example is over. Over means movement at a higher level than something else. किसी चीज़ से ऊपर but not touching that surface. He jumped over the wall but he is not touching that wall. So here in that case, the dog or whatever is jumping, the person who is jumping is not touching the wall. So we can use the word over. Next is across. Across means moving from one side of something to the another side, like crossing the road. So at that time we can say that the truck skidded sideways across the road. Clear? Now moving forward with some more examples of prepositions of time, because they indicate the time, hence they are called as prepositions of time. For example, at, in, on, they are the major prepositions of time. At is used when we are knowing the exact timings or we are very much precise about the time. हमें exact time जब पता होगा, like 8 o'clock, 10:30 a.m. For example, bedtime, breakfast time, dinner time. So you can say at 10:30 a.m., at 10 o'clock, at 8 o'clock, at breakfast table, at bedtime, and so on. Because we are very much precise about that time. At sunrise, क्योंकि ये सब timings fix हैं. In is used when we are not very much precise but there is a longer duration of time, like we talk about months, years, decades, century. A longer period is there, like in 1991 I'm talking about the year. I'm talking about in 10th century, in December, in 16 years time, and so on. So the duration is longer here, especially with years, with months we use in. Clear? In preposition of time. And when we talk about on as a preposition of time, we use it with days and dates.
Sunday, Monday, Tuesday, you will say on Sunday, on Monday, on Tuesday. With dates on 10th, 11th, on 11th, on 12th, on 13th, on 24th October, there is a holiday, and so on. So, similarly, we can also use them with festival names like on Christmas Day, on Diwali Day, on a summer evening, and so on. But if I talk about summers, winters, so at that time I will not say on summers or on winters. At that time I will say in summers, in winters, and so on. Now let's discuss some more prepositions of time. They are during. During means पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जब कोई चीज़ होती है. ड्यूरिंग मीन्स ड्यूरेशन होगा क्लियर, दैट इन दैट ड्यूरेशन दैट एक्टिविटी हैड हैपेंड. फॉर एग्जाम्पल वॉर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द समर, मतलब पूरा जो समर का ड्यूरेशन था, राइट, फॉर 1 month और फॉर 2 month और फॉर 15 days वट एवर, तो वो पूरा टाइम पीरियड जो था ड्यूरिंग मीन्स दैट, पूरे दौरान में, हिंदी में हम कहते हैं ना जो, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरिंग इन इंग्लिश. शी फेल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, मतलब जब परफॉर्मेंस चल रहा था उस ड्यूरेशन में वो गिरी थी. बाय मीन्स द लेटेस्ट टाइम बाय विच विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग, उस टाइम तक हम उसे कर लेंगे. शी विल रीच बाय 7 PM, 7 बजे तक आ जाएगी. दे शुड कम्प्लीट इट बाय मंडे, मंडे तक कंप्लीट करना है. सो लेटेस्ट टाइम विल बी टोल्ड बाय यूजिंग बाय. फॉर मीन्स व्हेन यू नो द टाइम ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन, कितने घंटे, कितने मिनट, how many hours, how many minutes, how many years, we know. At that time we will use for. Like he worked for 3 hours, he lived in Mumbai for 3 years, and so on. आपको ड्यूरेशन पता था, यहाँ 3 hours है, 1 year है, 1 minute है, and so on. बट सिंस कब यूज़ करेंगे? एट दैट एंड द टाइम व्हेन वी नो द स्टार्टिंग टाइम ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन एंड दैट एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग टिल नाउ. ठीक है. सिंस, लाइक सिंस मॉर्निंग आई एम रीडिंग, सिंस मॉर्निंग आई एम टीचिंग इंग्लिश टू ऑल माई स्टूडेंट्स. ही हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो काम कर रहा है. सिंस 1998 आई हैव बिन लिविंग इन बुलंदशहर, मैं 1998 से रहती आ रही हूँ और अब भी रह रही हूँ. सो इन सच केसेस व्हाट आई एम यूजिंग सिंस. फॉर यूज़ नहीं करूँगी. वाई आई एम नॉट यूजिंग फॉर? बिकॉज हियर द टाइम ड्यूरेशन इज़ नॉट क्लियर कि वो 3 घंटे है, 10 hours है, 10 years है, एंड सो ऑन. But only the starting point is known. Now talking about from means indicating the time जहाँ से हमने किसी चीज़ को start किया है. It is used to indicate the time at which something is being started by us. Like he worked from morning till night. तो from means से, कब से किया है? सुबह से. एंड एंड टाइम भी आपको पता है, टू इसलिए आपने लगा दिया या फिर टिल लगा दिया. शी प्रेज फ्रॉम 7 to 7:30 AM डेली. सो फ्रॉम 7 to 7:30, से तक. ओवर क्लियर. Now, some other prepositions are also there. They are prepositions of manner and prepositions of agency. Let us also see them one by one. Preposition of manner means किस वे में एक्शन किया गया है. These prepositions tells us about in which manner or how the action is done. Like the soldiers fought तो किया, but how? With courage, courage के साथ. So with here is a preposition, but it is used as a preposition of manner. She spoke, उसने कहा कुछ, but कैसे कहा? In a loud voice. So in is telling you, in is here is used as a preposition of manner. Manner की तरह use हुआ है instead of preposition of time or preposition of place. ठीक है. Now talking about preposition of agency. Agency means किसके थ्रू आपने वो काम किया है. These prepositions are used to tell by which means or which way you have done that action. ठीक है. बाय विच एन एक्शन इज अचीव. लाइक ही कट द ट्री, उसने ट्री तो कट किया है, बट किस एजेंसी के थ्रू, किस एजेंट के थ्रू, किसके थ्रू उसने कट किया है? एक्स के थ्रू. सो विथ एन एक्स. सो से जब हम लगाते हैं ना, किससे कटा? विथ एन एक्स. सो से. द ट्री वॉज कट बाय द वुड कटर. किससे काटा गया है? किसने काटा है? हु हैड डन दैट जॉब? हु इज द एजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब? वुड कटर. तो विच वर्ड इज टेलिंग यू कि वुड कटर ने कट किया है? बाय. So by is again the prepositions of agency. So with and by most of the times are used as preposition of agency also.
So hope you are clear with the prepositions of manner and prepositions of agency also. So girls, do watch the video more and more times to get best out of it, and definitely you will be able to understand the meaning of preposition and all its kinds properly. Chali, bye, thank you, take care.